जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए। Hello everyone. Oh, We're here. This is Khayal with Maria and Hannah. I'm Hannah, and I'm Maria. and we're here to talk about Bollywood cult classics today. Our favorite topic. Our favorite topic really is. Well, I think Bollywood is our favorite topic, and we just keep Yeah, using true. that. True. अब हम जितनी बार जो है ना बात करेंगे बॉलीवुड के बारे में तुम लोग इतने पकने वाले हो। और इस तरफ जरा देखते हैं ऑडियंस बस वो देखना। ओके गाइस, उसके अलावा कैसी हो? बिल्कुल ठीक। जिंदगी जिंदगी तो बस अभी ये सुना ना गाना, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए, बस यही चल रहा है आजकल। सो ये कौन सी फिल्म का गाना है, याद है? नहीं, मुझे भी नहीं पता, but I'm sure it is a classic in its yeah, own I am right. sure it produced such a good song. तो That everyone हम loves. गाने पे हमने इतना फोकस कर लिया कि मूवी पे ही फोकस नहीं कर पाए। जी एग्जैक्टली एक और भी गाना है, ये प्यार का नगमा है। हाँ, कल मैंने इसका जो म्यूजिक वीडियो ढूंढने की कोशिश की ओरिजिनल वाली, एंड इट वाज लाइक पता नहीं कौन सी फिल्म है ये, अनिल कपूर की इतनी पुरानी सी, एंड आई वाज जस्ट लाइक यार ये मुझे फिल्म ही नहीं समझ आ रही है कौन सी है। आई थिंक के हमारी जनरेशन में जेन जी में ये जो गाने हैं वो ज्यादा मशहूर हुए हैं ना कि फिल्म। That's Of true. course. And apparently the films weren't even good. Yeah. Apparently. Apparently. Allegedly. I think we wouldn't have liked it because of the क्या कहते हैं surrounding और जिस society में हम brought up हुए हैं, Right. उसमें we would have not liked it because That's of course जितनी पुरानी films हैं there are a lot of problematic things, there are a lot of stereotypes उसमें, लेकिन कुछ we watch it because of the fun, but कुछ we cannot. I think some of them is so nostalgic for us. Even while we were growing up, हमने K3G देखी, कल हो ना हो देखी, और वो सारी फिल्मों को वापस देखने का अलग ही मजा है, राइट? मुन्ना भाई भी आप देखो, वेलकम भी आप देखो। जितनी बार देखो you cannot, you keep on laughing on the same scenes. ठीक Yeah, है? same. Yeah. चाहे आप जितनी बार देख लो, even memes की भरमार है इंटरनेट पे, भरमार बिल्कुल लेकिन है। आप वो मीम देख के भी आपको हंसी आएगी। That's true. बिल्कुल सही बात बोल रही हैं आप। Because of course Where's it's the a idea. So let's get to our topic today. Cult classic. Cult classic क्या होता है? तो आप बताएं ना, आप सर्च करके आएंगे हाँ, Google पे। मैंने जल्दी से गूगल पे सर्च आ रहा था। So it's any film or book which has a particular section of society which is really interested in it. So I guess it's supposed to be like sort of niche films and not exactly the classics. The classics everyone's seen them. They're pretty masses के लिए massy. Yeah. ये मैंने एक्चुअली जो है ना कॉफी विद करण पे सुना था। वो क्लासी और मासी वाला। क्लासी और मासी को काटते गा रही है ना उसके लिए। और उस वक्त मुझे वर्ड पता नहीं क्यों आई फाइंड दिस वर्ड वेरी एब्सर्ड। It is absurd. It really is absurd. मुझे सेंस नहीं समझ आता, पता नहीं क्यों। और मुझे तो बहुत ही फ्रॉम मास सुन के कुछ फनी नहीं लगता। हाँ। When you listen to mass, it sounds so stupid. और उसकी वजह से ही लाइक दिमाग में फंस गया है कि मासी। हाँ। अच्छा, आपके पास कोई है डिफरेंट डेफिनेशन कल्ट क्लासिक के लिए? कल्ट क्लासिक की डेफिनेशन आई थिंक मैंने सर्च तो नहीं मारा, लेकिन अगर मुझसे कोई पूछे कल्ट क्लासिक क्या है तो मैं उसको ये बोलूंगी, ऐसी फिल्म जो आपका बार-बार देखने को दिल चाहे। अच्छा, ठीक है। आप मतलब कुछ फिल्म्स होती हैं which are a one time watch, you see the trailer, you watch it, Right. yeah, and then if the songs are good, you listen to it sometimes. कुछ मूवीज ऐसी होती हैं you keep on going back to Right. it. वो आपका कंफर्ट बन जाता है। That's आपको true. रट गई होंगी, स्क्रिप्ट रट गई होंगी, डायलॉग्स आपको याद होंगे, लेकिन you still go back, you watch it. Why? Because it's just good. It feels good. It makes you feel good. It makes you feel good. And it's your like relaxing time. Relaxing time. मतलब even अगर आप उस फिल्म को देखने के साथ साथ कोई और काम कर रहे हो ना, तो you can do that. Right. बिल्कुल। So उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। And आगे बढ़ते बढ़ते हम बात करने वाले हैं। When was the first time you heard about the term cult classic? I think during the pandemic, Okay. when
पेंडेमिक के दौरान जितनी मूवीज मैंने देखी हैं, right? I don't think I've ever seen उतनी पूरी जिंदगी में, because what I did was कि अच्छा पेंडेमिक के दौरान, because for some period films had stopped releasing new films, ठीक है? Right, बिल्कुल. So what I did is कि मैंने लिस्ट बनाई, ठीक है? I looked up पुरानी films, चाहे वो मैंने देखी हुई थी, Mm-hmm. I made lists and then Just to rewatch them again. I rewatched all of them again. और उस वक्त फिर जब मीम्स भी बहुत चलने लग गए थे, आई थिंक मीम कल्चर ज्यादा इट ब्लू अप ड्यूरिंग द पैंडेमिक. You think so? आई थिंक सो. Yeah, I feel like the meme culture always blows up when there's like political unrest. हाँ. Like not only in our True. country but like globally जब कुछ हो रहा होता है politically कुछ हो रहा होता है तब I feel कि सब कुछ नहीं, मीम्स ओवरऑल जैसे इफ यू टॉक अबाउट मीम्स, तो ऑफ कोर्स तो कुछ छोटा सा इंसिडेंट हो जाता है, दैट्स समथिंग पीपल कैन जस्ट पिन पॉइंट, उसमें मीम बन जाता है. लेकिन आई एम टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट मूवीज एंड ओल्ड मूवीज. okay. तो उनपे आई डोंट थिंक देयर वाज दिस कल्चर ऑफ पिकिंग आउट scenes from old movies and converting them into memes. ये पहले आई डोंट थिंक it was there 2018 तक भी. I've never really I don't know, मैंने सोचा नहीं इसके बारे में. mainstream. I don't know yet. I never thought about it कि कहाँ से है meme और कब start अब हुआ. स्टार्ट हुए, मतलब इफ आई ट्राई टू रिमेम्बर इट, मुझे नहीं याद कि मेन स्ट्रीम में ऐसा कुछ हुआ. हाँ, हमने अगर अलग से जाके सर्च किया, मैंने बहुत सर्च किए हैं जोक्स. उस वक्त तो टर्म भी जोक्स यूज होता था. वी डिडंट इवन यूज द टर्म मीम. अरे यार इतने भी कोई डायनासोर की एज से नहीं कर रहे. मीम्स तो आ गया था यार 2014 2010 तक तो बुला भी रहे थे यार. क्या हो गया? हाँ, 2015 से चलो वी कैन कंसिडर इट. या तो फिर मैं बहुत ज्यादा लेट आई. हम लेट आए शायद. तो मैं जो हूँ ना कल क्लासिक मैंने पहली बार तब सुना था जब आई थिंक अनुपमा चोपड़ा का शो था एंड शी वाज टॉकिंग अबाउट तमाशा द फिल्म एंड तमाशा became a cult classic. It wasn't a very huge success at the box office. Tamasha was a slow poison. Yeah, and you know the first time I watched it, I didn't like it. And I don't know if you watched that. I'm sure you actually watched. AIB का podcast आता था and वो रणबीर कपूर के साथ था. And Ranbir Kapoor के साथ he said they were talking about it and they asked a question कि Tamasha is such a cult classic and Khamba said, he's a comedian, Khamba said कि Tamasha में I didn't feel anything because I was already doing the thing I loved. तो मुझे तो कुछ भी like मजा ही नहीं आया उस फिल्म में, but जो मेरे साइड में बंदा था by the end of the film रो रहा था. Oh. So उससे मुझे फिर पता चला कि भाई कुछ cult classic नाम की कोई चीज होती है. So that's where I found out about it. So what are your like what's your take on Tamasha? Tamasha was, I think, one of Imtiaz Ali's best work. Okay. And वो पहली दफा जब मैं देखी थी ना, honestly मुझे समझ भी नहीं आई थी. हाँ मुझे भी नहीं आई कि ये हो क्या रहा है, because I think I watched it around the time when it released and उस वक्त इतनी mental health की awareness through movies नहीं थी. और even हमारे इसमें भी I think we were at that age जब we were not so aware of therapists. Right. बिल्कुल सही बात है. So I did not understand that movie. मुझे तो समझ ही characters ही नहीं समझ आ रहे थे. Right. I only understood the song अगर तुम साथ हो. I understood कि अच्छा this is a very sad song and I just like that song and क्या मटर गश्ती. फिर मुझे transition ही समझ नहीं आ रहा था कि ये why हुआ क्या है, why are they so happy शुरू में in the क्या कहते हैं interval से पहले and then interval के बाद the vibe completely changes. You're right. Even their costumes, the set, the design, colors, हर चीज it goes from bright to completely dull. तो वो मुझे उसका समझ ही नहीं आया कि ये हो क्या है. तो मैंने एक दफा देख के बस फिर यूज ही नहीं थे. Right. फिर I watched it again. I think एक दो साल पहले. Right. And then I got hold of it कि okay, this was a masterpiece by Imtiaz Ali. नहीं सेम थॉट्स बिल्कुल सेम. मैं गई थी सिनेमा देखने के लिए, मैंने सिर्फ गाने सुने थे. तुम तुम्हारे पास मेरे पास तुम्हारा कैमरा नहीं आ रहा. मेरे पास तुम्हारा कैमरा नहीं आ रहा तो मतलब हम दोनों जो एक सीरीज हो गए हैं बेसिकली. Should we continue or what? What should we do? Wait, okay, I'll just remove. तुम्हारा कैमरा ही नहीं आ रहा मेरे पास. सेम. Should we continue? रहेगा ही शो में.
हाँ है ना? हाँ हाँ पर ठीक है, होपफुली आई होप सो टू। आई आल्सो थोड़ी तो देर बाद फिर try करेंगे। या तो तमाशा में ये हुआ Yeah, your thoughts on Tamasha? Yes, Tamasha. I rewatched it recently because I think उसके पता नहीं कोई 5 साल हो. It released in 2015. तो अब कितने साल हो गए? 6 years. 5, 6 years हो गए ना. तो उसका I think कोई अनुपमा चोपड़ा did a revisit thing. So उसकी वजह से I also revisited. Anupama Chopra is a very big like film critic Yeah, in India and a good film. and a good film critic. और आप उससे सुने तो आपकी इंग्लिश भी अच्छी हो जाएगी. True. कितने फिल्मी वर्ड्स तो उससे सीखने को मिले। तो उसकी वजह से मैं I revisited it. I still didn't love the film. I don't think that it's a masterpiece, but maybe just something I don't relate with because it's like a very I guess adult sort of film in the sense that you're stuck in the job, but like I feel like it made more sense for the character and what happened later on because I could understand it better. The weird thing is कि Dear Zindagi was lauded as this, बिल्कुल mental health के ऊपर पहली film, but actually Mumtaz Ali had done it first. Like, Yeah, true. उससे पहले भी I'm sure कि कोई film आई होगी आई जो हमने होगी notice जो नहीं हमने नोटिस नहीं की करी. होगी। Right. Okay, so अब हमारा वक्त आ गया कि कल्ट क्लासिक की लिस्ट निकालें. हम लिस्ट निकालें. तो लिस्ट में कौन आता है जी? आप अपना शुरू करें. पहला हेरा फेरी। हेरा फेरी. फिर हेरा फेरी. ना भाई। मुन्ना भाई. Welcome. Welcome is the biggest one. मेरे घर में वेलकम एवरी संडे देखते थे पूरी फैमिली इज्तिमाई तौर पर. अजीब सा पागल लोग थे हम, पता नहीं क्यों कर रहे थे ये, बट वेलकम. 3 Idiots। मासी फिल्म, मेरी मासी. और क्या कहते हैं, कहो ना प्यार है। कहो ना प्यार. अरे वो तो इतनी पुरानी. हाँ अच्छी है, ठीक है. उसकी फिल्म है सच अ क्लीशे बॉलीवुड. उसके लिए पूरी स्टोरी पूरी स्टोरीज क्लीशे, So फिर भी cliche. वी गो एंड रिविजिट इट एंड वॉच इट। पता नहीं कुछ कुछ है इन मूवी, पुरानी मूवीज में देयर इज समथिंग यू विल फाइंड 100 reasons for it to be problematic, but still you'll But go you'll and still watch watch it, yeah. We'll talk about the problematic bits a bit Yes. later. We When we'll will. also talk about Kabir Singh. Of course, if you're addressing the good part, we should also address the bad part. Right. So, Cult Classic में there's this Rohit Shetty की film called All the Best. हाँ, तुम देखी? मैं देखी। हाँ, I think हमने हमने बात बात की की थी. Oh थी। my God, बहुत कम लोगों ने देखी है. And वो भी मेरे ना देखते हैं ना, वो निकलना चाहता है. ये जो मूवीज है ना, ये डू यू नो ऑफ द टर्म स्लीपर मूवीज टाइप की एक चीज होती है। बंद हो गए. आज क्या हो रहा है, देखा आज मुझे लग रहा है इंटरनेट की वजह से ये इशू हो रहा ये है। इंटरनेट की ही वजह से हो रहा है. अब क्योंकि I revisited our last episode just to see कि ऑडियो and सब टेक्निकल मसले कौन से हो रहे थे. एंड उसमें भी था कि हम एक दो जगह पे अटक गए थे, काला हो गया था. एंड देन देयर वर सम एरियाज जब हम नहीं नजर आ रहे थे, हम अटक गए थे एंड बट हमारी आवाज आ रही थी. ओके, तो हाउ डू यू नो कि हम अटक गए? मेरे स्क्रीन पे आ रहा है कि हमारे लोडिंग हो रही है. ओह अच्छा, हाँ मेरी स्क्रीन पे तुम अटक चुकी हो। और मेरे पास आ गया प्लीज इंश्योर यू आर कनेक्टेड, समथिंग वेंट रॉन्ग. तुम्हारे उस पे आया क्या? नहीं, मैं तो लाइव हूँ। तुम हो, तुम कंटिन्यू कर लो. ओके, तो ऑल द बेस्ट. ऑल द बेस्ट। अच्छा, स्लीपर मूवीज आई थिंक वो होती हैं which get successful over a period of time. Right. They don't get कि तुम्हारी पिक्चर आ रही है तुम्हारे पास? ओके, क्यों मेरे पास नहीं होगा? अब आ रही है तुम्हारे पास? नहीं, हाँ आ रही है, अब आ रही है. सॉरी. तो वेरी टेक्निकल इश्यूज। तो जो मूवीज जो है इंस्टेंटली बॉक्स ऑफिस पे हिट नहीं होती, लेकिन दे ग्रेजुअली कुछ टाइम के बाद व्हेन पीपल स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग इट, आहिस्ता 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 1-2 सालों बाद एकदम से and a lot of that has to do with memes as well, clips from the film itself. जब सोशल मीडिया पे आते हैं तब बहुत exactly, so people get curious enough to go and watch it, and then by that time it's already on like a streaming service, so streaming services get a lot of exactly. That's so true. And there's Ranbir Kapoor, one of the earlier films, Rocket Singh.
हाँ, That that was was also definitely the definition of that. of that because वो I think जब वो रिलीज हुई थी, as far as I know, people didn't even consider the plot line to be something Mm-hmm. sensible या logical. They considered कि ये क्या है, ये मतलब क्या है? there's nothing In different here. in this. Right. लेकिन if someone goes it and watches it जिसने नहीं देखी हो, they will notice कि that film was way ahead of its time. Right, बिल्कुल. मतलब it talked about entrepreneurship जो अब जाके it's become Mm-hmm. common to talk about it. लेकिन who's the director of that film? I don't I remember. don't know. लेकिन whoever it is, he or she made that film बहुत क्या कहते हैं, जैसे मैंने बोला it was ahead of its Right, time. right. No, and वो again AIB के उस podcast में ही I think लोगों ने तारीफ की थी कि यार रॉबर्टसन बहुत अच्छी थी and रणवीर कपूर was like अरे तो सिनेमा भी आना था देखने के लिए तो सिनेमा कोई नहीं आया सब लोग पसंद आ गया उसको that I found was really funny. Yeah. Another thing was कि मैं भूल गई आगे बढ़ और कोई तुम्हारे पास लिस्ट में है डालने के लिए कल क्लासेस कल होना हो K3G. ये 3G of course I feel like these are all classics Yeah, and these like are classics classics. के बारे में भी हम बात कल करेंगे क्लासिक में शोले आ जाएगी. शोले for sure शोले का तो फैन बेस ही अलग है अब तुम जो है ना शोले की डायलॉग्स सुनो हाँ. ऑब्वियसली जावेद अख्तर ने लिखे apart from कितने आदमी हैं the actual dialogues as well they're so like nice in Urdu they're very nice in Urdu does that make Javed sense Akhtar is a very beautiful person. beauty He's a beauty. totally Him and Gulzar. गुलजार that's I true love these. and उनके बच्चे भी अच्छे हाँ, हैं मेघना गुलजार and फरहान अख्तर मतलब ये इनका अरे इनका ना जोया अख्तर यार इनके डुओ. हाँ, जोया अख्तर भी of course. एंड मेघना गुलजार अब मेघना तो मैंने बोला. मतलब इट इज वेरी रेयर कि आपके पेरेंट्स के जीन्स फिल्म मेकिंग जीन्स आप में पास हो and they chose to make films instead of acting in them. Right. And they're doing that and they're doing an amazing job. They're doing an amazing job for sure. And when Farhan Akhtar used to direct, Dawn भी उसने बनाई थी. उस time पे Dawn was like something really different for the Bollywood market, Exactly. and especially with Shah Rukh Khan, and he's like the rom-com का बंदा, romance, Romance and then you film. make him into Dawn, and you're like, okay, this is good. Even Farhan Akhtar की first film was Dil Chahta Hai, right? दिल चाहता है, yes, I think he took a big risk उस for film में, sure. casting 3 big heroes of Right. that time. And क्या कहते हैं, also it was a big budget film. It was a big budget film. and उस time के हिसाब से like millennials love that हाँ. film because they're just like this was our breaking point. Yeah. We're going to go after this. I think fashion, the true essence of fashion actually started from that film. Really? हाँ, मैंने किसी इंटरव्यू में सुना था. I think Saif Ali Khan had mentioned, or I don't know who had mentioned, लेकिन someone from the film had mentioned कि fashion उस film के बाद people actually started giving importance to fashion, Like costume, you mean? costume and hair and all of Right, that. okay. Actors started getting particular about such things. I actually heard Saif Ali Khan say that during that time people would not like want to change their hair and stuff Yeah, because they wanted to stay in their look. in their look. Yeah, in their And look. for this, he had like cut his hair Yeah, to have like a different look. yeah. I've also seen that. ये किसी हम सेम सेम हम चीजें तो हम देखते हैं यार same सेम चीज चीजें देखते तो हैं. देखते हैं अभी दिल चाहता है as well आप अगर उस टाइम का देखें तो I think that same year लगान released Yeah. and what I think I was watching some sort of interview या किसी में This just this is the same. वही interview में I ये भी think so, I think so. what Amir Khan did in Lagan versus what he did in Dil Chahta Hai, Right. they were two completely different things. Lagan is like this history period हाँ. piece which is very very different. उसका look is so different. You won't even say कि it's from like same year, From the right? same year. मतलब उसकी पूरी vibe ही उसकी अलग vibe थी. ही अलग है And exactly. then comes Dil Chahta Hai with Like Amir modern. Khan all क्या कहते हैं, Being dressed up and as a in leather pants. in leather pants.
That is definitely a cult classic. It's such like especially for millennials, they love Dil Yes, Chahta Hai that so is. much. Like जितना वो लोगों ने representation मतलब feel करी थी उसके बाद से उन लोगों आई ने की थिंक नहीं है. सैफ, आमिर खान, इन लोगों की जो पुरानी, इवन अक्षय खन्ना, इन लोगों की जो अर्ली जो फिल्म्स थी इन अर्ली 2000s as well as 90s, Right. they were like really good. Mm-hmm. Since we've come on to the actors of these films, I feel like Akshay Kumar has such Yeah, a huge role to huge. play in these cult classics, and Paresh Rawal, Yes, of and course. you know those all the comedic actors, वो Johnny 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 Liver, Liver, हाँ Johnny Liver, so good. All the you know वो चुप चुप के में कौन सा बंदा था? राजपाल यादव. Yes, exactly. I'm so glad you got मेरे it को आता exactly था. now. जब वो ये सारी जो है ना फिल्मों के मेन They were, कॉमेडी हाँ, होती एक है एंड ऐसे. कॉमेडी ये लोग नेल करते हैं. Yeah, true. I'd heard, क्या कहते हैं, Tanmay Bhatt once saying कि films with Rajpal and actors like Rajpal and Johnny Liver, the director के पास पूरी script होती थी, but then specifically 10 to 20 minutes होते थे when the director used to hand the scene to these actors and they just said कि बस तुम संभाल लेना इससे अपनी comedy से, अपना कर लो. अपना कर लो, तुम जो करना है तुम कर लो. And that is so true because वो स्क्रीन पे आते हैं and you start laughing. You start laughing. It's like even K3G में वो छोटा सा सीन है जॉनी लिवर का with With ऋतिक ऋतिक रोशन. रोशन, हाँ, It's such a small वहाँ scene. वहाँ गए थे. Oh God, I know that scene. Yeah, कहाँ गए? It's such a small, like the dialogue so basic. yeah, Like it's like, nothing. हाँ, if you read it on paper, Like a person would what say is कहाँ this? गए थे, या वहाँ गए थे, कहाँ गए थे, वहाँ. वहाँ गए. Nobody would laugh. Nothing. Lekin the way he did that, it's chef kisses. That it really is. And यार वो किस्म की राइटिंग जो है ना अगर आप लाइक लिखे भी स्क्रिप्ट पे आप अपने एक्टर को समझा हाँ, सकें ये बात that is also a big task. ये वो तो बहुत ही लाइक director को डिफरेंट applause है चीज है. कि I don't was it even written in the script or was that improv? Who knows? who knows, Who yeah, knows? who knows. Only they know. We don't I know. think good acting completely not only depends actor पे कि वो अच्छी अच्छी performance दे रहा है नहीं, but also on the director. A Right, for director sure. should know what he wants to see, Yeah. what he wants to make. Director को पता ही नहीं है कि उसको क्या बनाना है, तो फिर he can also not expect Yeah. actors say a good performance from the actors. The direction needs to be like they need to like convey their vision, Yeah, clarity कि तुम एक्टर से क्या चाहिए yeah. एंड उसके बीच में उन्हें विगल रूम दे कि ये लोग अपना कर सकें अपनी परफॉर्मेंस दे सकें whether it's comedy or otherwise what they can provide for the director. इससे मुझे याद आया, who was the director of बर्फी? अनुराग अनुराग काश्यप बासु अनुराग बासु बासु. काश्यप दूसरा और लूडो भी उसने बनाई है, ठीक हाँ है. हाँ I'd हाँ heard क्या कहते हैं, रोहित सराफ in an interview say, and even other actors from Ludo, कि while they were shooting Ludo, मतलब if you've seen it, it was a very different film very than the different. usual. I love the I film. loved it. Genuinely love it. एक पूरा अलग सा एपिसोड लूडो हाँ. पे करेंगे. And मतलब उसकी direction, scripting, the way it was presented, it was very different from the conventional how conventionally movies are made. Yeah. And I'd heard in an interview that Anurag Basu knows what he's making. ठीक है, and the actors were like, he just gave us the script, that you have to do this, you have to say this, come like this, give these expressions, and we were like, ये क्या बना रहा है यार? बना क्या रहा है? We don't even understand what is going on set. एक टाइम पे ये सेट चेंज हो रहा है, दूसरे सीन पे ये सेट चेंज हो रहा है, मतलब we don't realize what's going on. लेकिन they said when we saw the final product, we were just in awe कि क्या हो गया. ये क्या बनाया उन्होंने. So I think that is something I really admire about Anurag Basu. He knows what he's doing. He knows what he should expect from his actors. You know, Ludo में the interesting thing was that the actor said that apart from the people in their scenes, they hadn't met for other people. So, like for Yeah. example, Sania Malhotra and Aditya Roy were together, but like Raju क्या नाम है? Rajkumar, sorry, Rajkumar. Rajkumar and दूसरी का क्या नाम है? लड़की का नाम क्या था? सानिया मल्होत्रा के साथ जिसने डेब्यू करा था. Yeah. Fatma ही नाम था. हाँ. Like they hadn't met. They hadn't met. They only met, I think, for the last scene. Last scene. Last scene में सब थे, so they met there. And also the music for Ludo was so good after such a long time.
वो कसम से इतना मेरी जिंदगी का खराब टाइम चल रहा था, मैं सुबह सुबह को जो है ना पूरा एल्बम लगा के सुनती थी। Oh. चलो भाई, आगे बढ़ते हैं। Cult classics, why are they relevant today? Relevant, I don't know if relevant is the word for this. Hmm. लेकिन I think we want to stay connected. If I talk about myself, I go and watch it, rewatch it bar, so that I'm connected to that era. Okay, I don't want to. Yeah, maybe it is an escape for me. Escape, yeah. इस बॉलीवुड से जो Hmm. which exists today. Not that I'm saying कि अभी अच्छी films नहीं बन रही. Good films are being made. Gangubai, I haven't seen it, लेकिन I've I heard also. like really good things about it. Hmm. देखनी भी है मुझे भी मुझे. देखनी है। लेकिन अच्छी बनती हैं लेकिन they come out once in a while. साल Right. में एक आ गई, 2 साल में एक आ गई. A film which you would say, okay, this was a good film. ठीक है, and you would also recommend it because I think recommending films to people is a very difficult task. Is अगर it? नहीं, if I find something good, मैंने recommend कर दी, सामने वाले को पसंद नहीं आई, वो जिंदगी में कभी मुझसे recommendation नहीं लेगा. That is why I'm really careful in recommending Okay. films to people. तो खैर back to the point कि I think I want to go back to that era when I was not there probably Okay, and yeah. just experience and just revisit. Okay. So I think relevance, I wouldn't use the word relevance, but I would use the word to stay connected Okay. to the past. That's What okay. about you? So, I feel like you mentioned, आजकल की film they're good, right? Their focus is on content-driven films. They have good stories, and you notice that comedy is changing. The comedy that we're seeing right now, like Dil Dhadakne Do mein bhi tum dekho, comedy is different. It's awesome comedy. It's Not saying it's but bad. that is like dark comedy and it makes you It makes you chuckle. It won't make you, go like ha ha ha. Hera Pheri mein every single beat is like ha 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 ha. yeah. Ha. So that sort of you need to revisit that to get those sort of laughs. And when people do try to recreate that sort of magic, like Welcome Back abhi recently bani thi, you horrible, gross, Very. disgusting. No one needs to watch that. And like Houseful 4 bani thi, everyone Oh like as soon God. as it came out, it got like cancelled, right? So these sort of films, even when they try to make it in today's era, we don't like it anymore. I don't know if it's because we're too hyper aware, we're too woke now, or because we're unwilling to let go of the problematic bits now, or like we just genuinely don't find it funny. And maybe that funny is like so intrinsically part of how when we were growing up. The nostalgia is so important कि हेरा फेरी और फिर हेरा फेरी जब आप अपने पेरेंट्स के साथ देखते हैं वीकेंड पे, it's just like another experience. Yeah. So yeah, that's Yes, that's it for me. I do agree what you're saying. Okay, I think our definition of funny is really इधर उधर इधर उधर. Yeah, हमने खुद ही define नहीं कर हमें पा खुद ही रहे. नहीं define Define कर सकते. and relevant in the sense मैं बोल रही थी कि memes के through it's still alive. Like we already talked about this obviously, but Yeah. like having even like TikTok and Reels में you have dialogue still going. Yes, we have permission. Yes, we have permission for this when we're ready. We talked to Pfizer. One second, let me. Sorry for that. I Random think button. CP is not a very good option. CP doesn't know when they are giving out permission to students and when Exactly. it's happening. Oh, we have Asadullah saying Hera Pheri was really good. It is good. Yes, It is indeed. We're fangirling we're over for it. it. So as I was saying, Reel and TikTok, they all have these sounds that you keep using for the old Yeah. films, right? And uski wajah se it makes you want to revisit them again. Yes, true. Abhi, I've noticed कि a lot of songs which were okay उस वक्त जब when they released, they were not इतना famous,
लेकिन अब because of this reel and TikTok thing, it has started blowing up so much, and it has actually started giving recognition to songs which उस time I think it deserved a didn't lot get more it, yeah. appreciation. लेकिन I'm happy चलो, but I just don't like it when they make when specifically Tanishq Bakshi makes remixes of old songs. Who's Tanesh Bagchi? Is that guy, right? Yeah, who keeps on वो destroying. रसोड़ी में कौन था? नहीं, that is Yash Raj Mukhate. Okay, yes. Tanishq Bagchi is a person who has destroyed a lot of Destroyed. Bollywood अरे songs, खत्म कर दिया. old good Bollywood songs by remaking them. Okay, I have not heard of this person, and You, by your you should not. suggestion, I should You not know should of this not person. even know of this person. Yeah. So moving on, let's talk about the problematics just Yes. bits. We do revisit them despite the sexism, the stereotypes, the bad stuff. Yeah. But what all are the problematic bits? Let's go movie by movie. अच्छा, ठीक है? तो हेरा फेरी कर लो. हेरा फेरी हेरा से फेरी फिर हेरा start फेरी. करते हैं. I would like to hear your point of view first. Okay, I'm gonna go a bit philosophical here. Okay. Sure. So Hera Pheri and Phir Hera Pheri are intrinsically capitalist consumerist films. Free from modernity. Spoken like a true Habib student. अंदर का हबीब ज़ाहिर है कब बहुत बाहर निकलेगा फिर ऐसे ही आप समझ नहीं रहे. आप ये हमें बताना चाह रहे हैं कि हमें पैसे की जरूरत है ताकि हम अच्छी जिंदगी जी सकें. Exactly. ऐसा ही है वैसे वो. But yeah, other than that, objectification of women. Women don't have like a proper role in the film. They're merely there to, just accessorize the heroes. Yeah. If we talk about Hera Pheri and Hera Pheri, um, this is not like problematic or anything, but oh Rude my god, I completely interruptions forgot about were getting to the good parts. I think it was when the guy came. Oh, Yeah. So this is not like completely bad, but the fact that their songs were literally the sound effects. yes, they were. I Not mean, that they were Anu Malik made a song out of Paw Paw Paw. Who? ladki. That song still doesn't make sense to me. ठीक है? It's such a funny song. ओ उसमें problematic चीज क्या है पता है? वो तुम म्यूजिक वीडियो देखो तुम लोग उसके अंदर in the middle because the girl Tabu was trying to pursue Sunil Shetty, right? She's Okay. supposed to be seductive, Yeah. seducing him in that song, and in the middle of the song Sunil Shetty literally slaps her, and it's just great for laughs. And I'm like, sure, violence, yes, why not? Female, why not? Problem, yes, not problem, no problem. ओह इससे मुझे एक और भी सीन याद आ गया. बोलूं? बोलो. It's not from a cult classic. It was a Pakistani film. It was called पंजाब नहीं जाऊंगी. That film was so badly written. इतना कोई खराब उसकी कॉमेडी थी कि उसमें वो लोग ट्रैक्टर जोक बोलता था और उसी फ्रेम में पीछे बंदे हंसते थे. And the only time the cinema laughed was when who was the main actor? Humayun Saeed, right? He slapped the girl, Mehwish Hayat, in the film, and everyone laughed then. And it was a laugh of surprise in the theater. They laughed, and then they played it for a joke in the film. He slaps her, आवाज आती है नीचे in the film itself, and the guy is like, oh, अब ये क्या हो गया? And it was so disgusting. I hated it. I just hate that movie so much. पंजाब नहीं जाऊंगी. हाँ. It was such a bullshit film. Like, can the Pakistani film industry just do something about So themselves? apparently, Humayun Saeed is working on a film called London नहीं जाऊंगा. यार उसे बोलो जो ना अपना He बैच should पैक just- करके जाए अब वो. और फिर मैंने इसका एक मीम देखा था कि मैं भी सिनेमा नहीं जाऊंगा. And I laughed so much. मैंने बोला सही बिल्कुल सही बात है ये. You know the funny thing is Sinfe Aha he is one of the executive producers. You see it? Sinfe Aha में executive producer में नाम आता है. But Sinfe Aha की भी अलग ही कहानी है. उसका ना कोई स्टोरी तो चल ही रही है. बस यही वो ट्रेनिंग montages ही कर रहा है. एक दिन हम properly like Lollywood and अपना Yeah. पकड़ के बातें करेंगे. But अभी हम आ जाते हैं problematic क्या है फिल्म में तुम्हारी? मेरे लिए I think most of the points तो तुमने ही mention कर दिए. Right. But एक चीज मुझे अब I don't know if people will agree with me on this के although they Paresh Rawal, Akshay Kumar, Sunil Shetty, they were
kind of गरीब in that film, ठीक है? Kind of. Kind हाँ of बहुत गरीब थे, इतने के रेंट देने के भी पैसे नहीं थे हाँ उनके हाँ, पास, लेकिन still they were surviving हंसी खुशी. हंसी खुशी से, हाँ. That I found really surprising. अब जब when I Revisited. realized कि जितनी दफा I watched the film, I realized something new. हम्म. Yeah. तो I realized कि इतनी हंसी खुशी तो नहीं इंसान, अगर आप if you're homeless, you don't have the money to eat food, you don't have a job, how are you so happy? ठीक है, you need something to survive. And उन basic survival necessities में से भी अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, तो how are you just making jokes and living? Yeah. So you're saying कि portraying reality तो बिल्कुल भी था हाँ, ही नहीं. reality नहीं थी, it was ठीक है, it makes sense, they They focused weren't going more for it. on the क्या कहते हैं jokes Jokes. and on the laughing bit, so they tried to make it as nonsense as possible. So वहाँ पे it makes sense, It लेकिन does, if yeah. you see it from a philosophical point of view as reality Yeah. के perspective से उसको अगर आप देखो तो it definitely makes no Right. sense. So, well, if you look at Bollywood in general, especially the ones that we're talking about, classics, mein, या Bollywood तो has always been about escapist cinema. It's only in the last few years that it's going it's towards a going realistic. realistic Right. cinema, मतलब it's either too exaggerated Right. या फिर कुछ भी नहीं, मतलब अगर आप हाँ. या तो बहुत ही गरीब है या तो फिर इतना अमीर है कि आप अपने तसव्वुर में ही नहीं आता. तसव्वुर में नहीं है, आप हाँ. केसरी जी में आप कि आप हेलीकॉप्टर से में ही आ जाएंगे. हेलीकॉप्टर में आप आ रहे हैं जा रहे हैं, फिर क्या अमिताभ बच्चन आईमैक्स चलता है वो. That scene, although that is a single dialogue, लेकिन it makes me laugh so much कि when he tells Jaya Bachchan कि does he have an iMac? Oh God! And वो सीन देख के मुझे एक ही बस अमीरों के चोचले. You know, I was watching an interview Karan Johar ki, and he said कि his first film was कुछ कुछ होता है, right, and it became such a huge Yeah. success. कि K3 जी जब बनाया, he had such a huge budget. He was like, I did not need that stupid helicopter. Yeah. There were so many unnecessary shots Unnecessary that he shots. took, and it was just because he had the budget and he could. Like Manish Malhotra के कपड़े सबको पहना रहा है ये बंदा तो. और मैंने उसकी जो है अच्छा I saw because of course I'm a big Bollywood freak. Right. मैंने केथरी जी की behind the scenes देखी थी, मैंने ठीक भी है. देखी. हाँ, अब वो I think वो कुछ 20-30 मिनट्स के 5 6 पार्ट्स हैं. और Right. उसमें एक पार्ट में he mentions कि the last scene जिसमें credits roll हो रहे होते हैं, they did not have the space to make it more longer, जिसमें they had to show ऋतिक और करीना की शादी. तो वो छोटे से बॉक्स में they made everyone wear मनीष मल्होत्रा के कपड़े and फिर भी they shot it, और वो छोटे से उसमें भी उन्होंने दिखाया है उसके कपड़े से कोई फर्क नहीं कुछ नहीं पड़ता. पता चला. वो कहीं बाजार से भी लेके आते हैं, बना देते हैं, कोई नोटिस भी नहीं करता. अरे भाई हमारे करण जौहर को अब क्या ही बात कर रही है. करण जौहर की भी अलग एपिसोड ही चाहिए. True. लिस्ट में ऐड कर दो करण जौहर. We could have an entire directors के ऊपर. Oh yeah. We know our directors. Directors round table. Oh, अरे. Okay. So since हमने अपने टाइटल में भी डाला था ये, तो I think कबीर सिंह के बारे में बात करनी पड़ेगी. Yes, मुझे कल से बहुत बेसब्री है जब से आपने मुझे इसके बारे में बताया है कि क्यों आपको लगता है कि कबीर सिंह में जो स्लैप था that was not problem. Okay, firstly, Kabir Singh is not a classic or a girl's classic. But this thought just came in our minds कल ही when we were discussing about कि क्या बात क्या बात करनी है, तो we thought कि why not just add it because Yeah. मुझे जानना है, मुझे भी अभी तक नहीं पता. Okay, brace yourself. Okay. So the slap. Okay. I'm not saying that domestic violence is fine. I'm just saying that according to Shahid Kapoor's character in that moment, that slap fit well. The thing that I find more problematic is the fact that he isolated Kriti. Kriti naam tha na uska? Preeti. He isolated Kriti in school, made sure that she had no friends other than his friends and himself. Yeah. Made sure that she had no support network during that time. That as soon as they broke up, that meant that she had no one. That is what I found Yes, most problematic. that was problematic. Of course. I feel like that was worse than the slap. You know why? Because the slap was a physical thing, but isolating This was emotionally, mentally draining. It was emotionally, mentally, सब कुछ आप जो है अलग उसे कर रहे हो. And another thing that I found problematic was the fact that he got a happy ending in the end.
If Yeah, he's done so much bullshit, happy ending and नहीं होनी थी. true. So for me, the slap was in अच्छा, line with his characteristic and that moment in time. इसमें इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, इस मूवी के आई हैव 2 ब्रांचेस, ठीक है? ठीक है. एक थी प्लॉट लाइन स्टोरी पूरा, और एक थी उनकी एक्टिंग, ठीक है? ठीक है. शाहिद कपूर की और कियारा की. हम्म. द एक्टिंग वाज वेरी गुड, ठीक Top है? notch. टॉप नॉच एक्टिंग थी. दे वेंट इनटू देयर कैरेक्टर रोल परफेक्टली वेल. फिर आती है स्टोरी लाइन, दैट वाज कंप्लीट बुलशिट. मतलब मूवी देख के मुझे, अगर मैं इस परफॉर्मेंस को हटा दूं, तो हम्म. मुझे ऐसा लगा कि मैंने अपने 2.5-3 घंटे ज़ाया किए. बर्बाद किया. मतलब कुछ हासिल मैंने नहीं किया, नहीं. उल्टा दिमाग मेरा और खराब मूवी देख के. तो इफ आई रिमूव द एक्टिंग बिट, तो हम्म. वो मूवी में मुझे कुछ सेंस नहीं नज़र आया, लेकिन एक्टिंग की वजह से मैंने बर्दाश्त कर दिया. बर्दाश्त कर. You see, like the story itself, you're right, wasn't that amazing. Most of it was Shahid Kapoor drinking and doing drugs and trying to get over the fact that he screwed up. एंड द क्या कहते हैं, ऑल्सो व्हाट वाज इवन मोर सरप्राइजिंग, how was he operating on a person Intoxicated. intoxicated? And that was like something that the nurses were like giving him. Yeah, he needs this to function. Exactly, you should That be. was crazy. मतलब, I was shocked कि ये, how is this even, how I, did this even make sense to the writer? so this is like a Tamil adaptation. I think Arjun Arjun Reddy से ली Reddy. थी. हाँ, मैंने Arjun Reddy actually थोड़ी सी देखी है. Just the शुरू का bit is literally the same thing. So he's also like angry guys. But actually the some surgeons की board and stuff, they actually sued the film because it showed कि intoxicated Yeah, के आप operation करो and actually of में course, उस पे तो हो नहीं सकता. कितने ही केसेस और हैशटैग्स बन गए थे उस पे तो. हम्म. It got film cancelled at the moment it people realized कि ये, अच्छा, ये सब हो रहा है मूवी में. देखो फिल्म तो जो है ना on its own, because of the acting, as you said, it stands. It has great songs as well. Songs are very important for us. Songs are important for us, of course. Background. But again, there were a lot of problematic aspects of it. And when I watched I had been like delaying watching this film because I had heard कि इतना ये problem है और ये. And I don't know if you remember उस साल का round table वाला actress का with Rajiv Masan. उसके अंदर they were praising Shahid Kapoor and they also asked him, Rajiv Masan asked Shahid Kapoor कि what do you think about this criticism, and he said कि भाई मेरा तो काम है actor के तौर पे, I'm not gonna do Yeah, something. that was, I think, a fair point on I Shahid. also think so, yeah. He could not do anything. अब वो character में उसका था, कैरेक्टर ही है तो उसका character था, he had to do it. हम्म. लेकिन I think इसका जो पूरा that depended on the writer and the director. Right. ठीक है, they could have. The slap was स्क्रिप्ट की डिमांड. सही है, समझ लिया, एक्टर ने भी अच्छा कर लिया, ठीक है, उसके कैरेक्टर के साथ था. द एंडिंग वाजंट. एंडिंग जो है could have been ये बर्बाद हो जाता बंदा बेटर मुझे लगता. Not gonna lie. Another thing was कि मैं भूल गई. Another thing was कि मैं भूल गई. बस मैं भूल गई. मैं भूल गई. शायद कपूर के बारे में कुछ बोलना था मैं भूल गई. Oh yeah, okay. So when I told my sister why I didn't find this film problematic, क्योंकि हम दोनों ने जरा डिले करी थी. as soon as ये Netflix पे आई थी ना, फिर मैंने देख ली थी. क्यों after listening to शाहिद कपूर से कि मैं तो एक्टर हूँ, मुझे तो ये करना ही है. And script के हिसाब से it worked. So I saw it and I felt the same. कि script के हिसाब से it worked, and I told my sister about this. And she watched the film and then she was like, yes, you're right. But then she read an article about how the person who had written the article had said कि Kabir Singh में they showed कि the slap was part of his love, right? That violence was part. बस It was so हाँ, इतनी शिद्दत से वो उसे प्यार करता exactly. था कि it culminated in a slap. And that's not a right message to give to someone who is already शिकार इसका. राइट. उन्हें फिर आप बोल रहे हो कि हाँ जो आपकी सफरिंग है वो वो सही सही है. है क्योंकि वो प्यार है. Exactly. वो तो उससे वही, प्यार है. तो that is वो what मसला triggered है. everyone. वही कि मेन मसला है. वही मसला था ना कि मतलब अगर हम स्लैप itself को अगर हम सेपरेटली देखें, तो उसका कोई स्टैंड नहीं है. वो हम्म. स्लैप
प्रॉब्लमेटिक बना शाहिद कपूर के कैरेक्टर की वजह से। हाँ तो he's- आई मीन स्लैब नहीं रखते तो आई थिंक थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट। you think so? उसकी जगह पे फिर क्या करते? Was he going to like come up to her and shake her? What would have been? आई थिंक Or उस could it have वक्त been like बिल्कुल ही हटा देते? वो आई पूरे सीन थिंक को हटा देते? होना क्या चाहिए था कि इट वुड हैव बीन बेटर इफ शायद जब वो उसको मारने आ रहा होता ना, प्रीति वुड हैव स्टॉप्ड हिम, उसका हाथ पकड़ दी, एंड देन शी वुड हैव एक्चुअली कन्फ्रंटेड हिम फॉर ऑल द बैड थिंग्स दैट ही डिड उसके साथ शुरू से लेके। पर वो तो फिल्म को करना ही नहीं था। फिल्म को तो सिंपैथी तो उसके शाहिद कपूर के साथ ही दिखानी थी। वही They प्रॉब्लम, weren't even following कृति स्टोरी ना। दैट कृति वाज द प्रॉब्लम राइट। राइट एंड मे बी शी जस्ट फॉरगिव हिम कि ऐसे या उसने कुछ किया ही ना हो। हाँ एंड में लाइक आफ्टर इवन गेटिंग स्लैप शी कम्स टू हिज हाउस टू यू नो एंड वो तो नशे में पड़ा हुआ होता है। एग्जैक्टली मतलब हमने फिल्म एनालिसिस कर दी नहीं जानते हुए भी हमने फिल्म डेफिनेशन ऑफ एनालाइज कर ली। टॉक्सिसिटी था वो उस फिल्म में। बहुत ही I don't think any other actor could have pulled it off other than Shahid Kapoor. या प्रोबब्ली। And like honestly, I feel like Kiara Advani का रोल कोई भी कर सकता था. Sorry, don't kill me. Because she didn't really have much of the role. या Like dialogue wise, be nothing. आई थिंक तापसी वुड हैव प्लेड a good role. Do you think Taapsee would have taken this role? No, When she's so इतनी I submissive I don't think she would have, तापसी को लेती वो है। लेती ही नहीं वो कभी भी, उसके इंटरव्यू से पता चल जाता है कि वो लेती क्या है क्या नहीं considering लेती। her choices of films, Yeah, never. never in a million years We would know she Taapsee take it. Pannu to Yeah, we know her too well. we know her too. We watch all everything. We know everything. तापसी तो इधर दिल के करीब है बिल्कुल। दिल के करीब है। चलो अब जो है ना मीम्स का वक्त हुआ चलता जी, है। आपको स्पैम किया हुआ है मैंने हाँ पूरा। हाँ हम बस खोल के रखे हैं ताकि हमारा चैट जरा एक्सपोज ना हो जाए। हाँ मिल गया। अरे आपने तो उसी के लिए जिसके हमें बेताबी है। चलो जी एवरीवन रेडी लेट्स डू दिस। ये लो there you go. Shit. 150 रुपया देगा। ये तुमने बीच में से लगा है? ये बीच से दिया है? ओह माय बैड सॉरी डियर। ओ तुमने ये आगे हमारे स्नेह ग्रोवर के हाँ, आगे थोड़ा आगे। थोड़ा आगे चैट एक्सपोज। बस सही है हाँ। नहीं यहाँ पे है कुछ। ये पीछे एक है ये है और ये है। नहीं ये तो वही, ये तो पुराना हो गया ना। पुराने एपिसोड शार्क तो टैंक ये के। कहाँ से? अच्छा ओके ओके हाँ ठीक यही तो है यार फिर। हाँ सॉरी आई वाज सॉरी। अरे कंफ्यूजन एनीवेज मेरे दिमाग ये भी एक्टर वैसे बहुत अच्छा है। ये तो इसका नाम मुझे नहीं याद आ मुझे रहा, भी नहीं याद। लेकिन ये तो एक क्या कहते हैं बिल्कुल परफेक्ट पोर्ट्रेयल था इसका इस फिल्म में। जो आई थिंक दिस टीथ 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 थिंग दैट दे डिड, या इट वाज अमेजिंग। दिस गाइस नेम वाज क्या दो नंबर कुछ क्या कुछ बहुत ही अच्छा वो समथिंग सेठ था इसका नाम ना। कचरा सेठ। कचरा सेठ कचरा सेठ कचरा सेठ 150 रुपया देगा। डिजाइनर्स कोटिंग अ प्रोजेक्ट बजट 40 लाख इंडियन क्लाइंट 150 ओ ट्रू। यार तुमने ली ये हाँ ये तो डबल हो गया है। बस थोड़ी देर सो जाता Me every day. ऑल द टाइम लिटरली लाइब्रेरी के पीछे लाइफ में जाके शेल्फ के पीछे जाके मैं मस्त बस थोड़ी थोड़ी देर देर सो सो जाता हूँ। ऐड करना एंड Oh, this was such a good scene वैसे इसके अंदर और ये 50 रुपए का एक्टिंग ओवर एक्टिंग 50 रुपये का ओवर एक्टिंग। दिस वाज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। हो गया। पुराने गानों को हाथ मत क्या लगा, मैं तो हाथ पैर भी क्या मैं तो लगाऊं। पैर भी लगाऊंगा। इतनी पुरानी भी तुमने देव आनंद की बोली है। नहीं दिस इज राजेश खन्ना। This is राजेश खन्ना सॉरी ये कौन है? नो लेडी आइडिया, नो आइडिया। मुझे पुरानी हीरोइंस आई डोंट नो व्हाई मुझे सब एक जैसे लगते हैं।
You know, it's probably because they didn't have a big role. Probably. I don't know if that is the reason, लेकिन for some reason I find all the heroes में चलो there is a difference that I can see, लेकिन heroines में मुझे difference ही नहीं नजर आता. All of them look the same. Who all? मतलब जैसे अब ये है, ठीक है, ये तो इनके है. जैसे और बहुत होंगी. आशा अब पारो कुछ का. कुछ कुछ को I can recognize नीतू कपूर. नीतू I कपूर can या recognize डिम्पल कपाड़िया भी आ Dimple जाती है. Kapadia. I can recognize. Right. You can also recognize हेमा मालिनी, जया बच्चन, हाँ, जया I can recognize. वो जावेद अख्तर की जो जोजा हैं, जिनका नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा. शबाना आजमी. शबाना. हाँ, probably. हम यार इतने भी पुराने, अब क्या कर, अब हम कर भी क्या सकते हैं. HR says your salary is double. जोर जोर से बोल के रो कर सबको स्कीम बता दे. Oh, this is a nice CID reference. IPL सूर्यवंशम starts. Oh God. मैंने एक टाइम था जब इंडियन चैनल्स चलते थे, तो सोनी मैक्स पे मतलब रोज, ठीक है, स्पेशली वीकेंड्स पे तो 3 बजे सूर्यवंशम चलती थी. What is Suryavansham, bro? You not I watch know. Suryavansham? Am I supposed to? I have no idea what Yes, you should. मतलब that. अरे भाई, मुझे नहीं पता तो इनको भी नहीं पता. बताओ सबको Okay. क्या है So सूर्यवंशम. Suryavansham is a film by Amitabh Bachchan, ठीक है, उसमें he does a double role. He plays father और अपना बेटा खुद ही. अमिताभ बच्चन. Yes, you should watch that film ASAP. ठीक है, and that film is so, I don't मेरा know, that homework is है. so hilarious. ऐसा कोई इसमें कॉमेडी सीन नहीं है, लेकिन उस फिल्म का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो रोज चलती है सोनी मैक्स पे. रोज. सबसे बड़ा मसला ये है. मतलब 20 साल से रोज उस फिल्म को चलाते हैं. सोनी मैक्स पे सोनी मैं भी मैक्स पे. देखूंगी अंदाज. ठीक है, अभी आई डोंट नो अभी चली है कि नहीं, लेकिन तभी ये मीम था कि आईपीएल जब चल रहा होता तब पूरा सोनी मैक्स पे आईपीएल ही आ रहा होता है, लेकिन एज सून एज आईपीएल गेट्स ओवर सूर्यवंशम आपको देखने को मिल जाएगा. ठीक है. तभी आई गेस. नहीं, वैसे सूर्यवंशम है उस पे प्लेटफॉर्म्स पे, लेकिन एज अ मीम कि तभी वो लोग इतने टाइम से प्लेटफॉर्म पे डाल नहीं रहे थे क्योंकि टीवी पे इतनी चलती है वो मूवी. चलो ठीक है. एवरीवन, ये भी सूर्यवंशम का मीम है एक. अच्छा. Until the real gangster walks in. ये तो everyone is gonna like बिल्कुल सर के ऊपर से चले जाएगी. तैमूर प्लीज मीडिया. Oh, this is so true. The amount of attention Taimur received. Okay, for context, guys, Taimur is Kareena Kapoor सैफ अली खान सैफ का अली बच्चा. खान का बच्चा जो अभी से स्टार बन चुका है. पता अरे नहीं वो तो क्यों. एग्जिस्टिंग के साथ सारा है वो तो. अभी से लोग उसकी क्या कहते हैं फिल्म्स के बारे में बातें करना शुरू हाँ हो भाई. जाते हैं. अरे कॉफी विद करण पे वो करण पूछ रहे हैं कि भाई क्या है इसका फ्यूचर, क्या है सीजन तक मार तो जाए. इस शो के बाद I'll show you a video and you will just laugh वो देख के. भाई माँ ने आज फिर से लौकी की सब्जी बना दी. ऐसा नहीं हो सकता, तुम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो माँ. This is what my brother and I actually do. आज क्या बनाया? आज क्या बनाया? क्यों? ऐसे कैसे कर सकती हो माँ? My mom hates सब्जी, मुझे ये मसला ही नहीं है. Oh God. Be like राज. यहाँ पे तो क्लासेस नहीं मिलती. राज को हमें एचयू लेके आना चाहिए to भाई find us our तो classes. ये बता दे. Salad gives us some soldier season longer. Soldier. No. Device activity. This is so true. This is good यार. I wonder करण जौहर को इसका ख्याल कैसे आया होगा. You know, he just steps down from the helicopter और वो अपनी थाली लेके. और you know what is the funniest part? कि this is the expression she gives every time. ठीक है, the expression doesn't even change. वो ऐसे ही हंसते हुए. And then he's like, तुम्हें हमेशा पता चल जाता है ये ऐसे ये जो है ना. अरे भाई हमारे करण जौहर. ये अच्छा, ये दो मीम्स है, ऊपर वाला अलग है, नीचे वाला. वो क्या? Because robbing with guns is too mainstream. Have you watched Special 20 Special Yes. 26?
That's a good one. That's a very it's a good good, one. it's a good film. So we're just looking at this then. Everyone should watch. Yes, वो भी and नाम शबाना भी. नाम शबाना was so hard to watch, honestly. It's just so jar. मैं बाद में बात करूँगी Okay, तुम्हारे साथ. okay. It's not made well. जब भी कोई लड़का है हमेशा दिल दीवाना हो होने keep calm. क्योंकि मेरे मेरी करम. और एक बात क्या? हाँ. राज भाई का पैसा कम दो. Oh, that's a good one. yeah, people, comedians से ज़्यादा I think people are savage in the comments. They are. That's why Kapil Sharma also हाँ, did they that. introduced this. सही स्कीम थी उसकी बिल्कुल. अरे अच्छा स्मार्ट आइडिया था. Smart. आई थिंक who started अपना ये मीम रिव्यूज भी तो सारे वही तो हैं हाँ. कि दूसरों के हाँ, जोक्स पे आप दूसरों की. अपने का कंटेंट बना Yeah. लो. चलो गाइस Oh. उस हिसाब से तो आज का शो क्या बोलते हैं इख्तिताम की तरफ ले चलते हैं हमारे इस प्रोग्राम को. उम्मीद है आपको बहुत लुत्फ आया होगा. हमारी बातों से लुत्फानंदोज आप हुए होंगे. जितनी उर्दू आती थी सब मैंने बयां कर डाली है. हम मिलते हैं आपको अगले शो में अगले थर्सडे इसी वक्त पे. अरे जुमेरात सॉरी अगले जुमेरात को. थैंक यू असद. थैंक यू एंड मेरी ऑल एशिया नंबर 1 कॉन्करर कविता किचन होस्ट वर्ल्ड ग्लोबल हना मापारा के साथ. हेलो और क्या पिक अप द डे. मैं तो इंट्रो ही चला लेता इंट्रो. ओके थैंक यू गाइस. खुदा हाफिज़. टेक केयर. ट्यून इन नेक्स्ट. खुदा. जिंदगी कैसी है पहेली हाय. कभी तो हंसाए